Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to lecture number 14 of Differential Geometry. लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेने अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ा था, फ्रेने अप्रोक्सीमेशन फॉर यूनिट स्पीड कर्व्स, और उसके बाद हमने इस सेक्शन को कंक्लूड किया था। उसके बाद हमने इस केस को देखना शुरू किया था कि अगर हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व ना हो तो उस कर्व में हम फ्रेने फ्रेम कैसे कैलकुलेट करेंगे और फ्रेने फार्मूलाज क्या बन जाएंगे उस केस में। और इन फार्मूलाज को अप्लाई करके हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था। स्पेशली हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन के जो दो कंपोनेंट्स हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, उनकी फिजिकल मीनिंग क्या है और वो क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आज के लेक्चर में हम फ्रेने ऑपरेटर्स फॉर ए रेगुलर कर्व को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। उस केस में हम फ्रेने फार्मूलाज को अप्लाई करके इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फ्रेने फार्मूलाज के काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हो सकती हैं, लेकिन उनमें से हम चंद एक को कंसिडर करेंगे और उनमें से एक जो है वो स्फेरिकल इमेज है। स्फेरिकल इमेज के केस में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी कर्व का स्फेरिकल इमेज डिफाइन कर सकते हैं जो कि कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज को डिपिक्ट करेगा। उसके बाद हम सिलेंड्रिकल हेलिक्स की डेफिनेशन करेंगे। दिस इज वन ऑफ द अदर important examples which is an application of Frane formulas and Frane frame field for arbitrary speed curves. उसके बाद हम इस सेक्शन को कंक्लूड करेंगे। स्टार्ट लेते हैं जी। कोई भी आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व है मेरे पास अल्फा, देन ये थ्योरम है जिसका हम अब प्रूव करेंगे कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है by dividing alpha by its norm, and it makes sense क्योंकि अगर हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करना तो हम क्या करेंगे, हम इट इज अल्फा प्राइम, उसको डिवाइड कर देंगे अल्फा प्राइम नॉर्म के साथ। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली अगर नॉर्मल कैलकुलेट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बाय नॉर्मल और टेंजेंट का, और अगर बाय नॉर्मल कैलकुलेट करना तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे अल्फा प्राइम अल्फा डबल प्राइम का और डिवाइड कर देंगे उसके नॉर्म के साथ। सिमिलरली अगर हमने कर्वेचर कैलकुलेट करना तो कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए अल्फा प्राइम अल्फा डबल प्राइम का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड कर देंगे अल्फा प्राइम नॉर्म के क्यूब के साथ। और सिमिलरली अगर टॉर्शन कैलकुलेट करना तो पहले इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे विच इज़ अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम, और उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे अल्फा ट्रिपल प्राइम के साथ और डिवाइड कर देंगे अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम नॉर्म स्क्वायर के साथ। फॉर आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व्स दैट्स हाउ वी कैलकुलेट टेंजेंट, नॉर्मल, बायनॉर्मल एंड कर्वेचर एंड टॉर्शन। सो अगर कोई भी आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व गिवन हो, जो कि यूनिट स्पीड कर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हम इन फार्मूलाज को कभी भी अप्लाई करके ये जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने का हमारा अपरेटस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनको प्रूव कैसे करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था that alpha prime is equal to vt। इसका हमने प्रूफ किया था और प्रूफ बहुत सिंपल था। अगर अल्फा कोई आर्बिट्रेरी कर्व है then the speed of the curve is alpha prime norm, so the speed is basically the magnitude of the velocity। सो इस चीज़ को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, और यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ t की, विच इज़ अल्फा प्राइम डिवाइडेड बाय अल्फा प्राइम नॉर्म। सो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने का पहला फार्मूला आ गया है। और
नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू कैलकुलेट द कर्वेचर. सो वंस अगेन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दैट अल्फा प्राइम इज इक्वल टू वी टी एंड अल्फा डबल प्राइम इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी टी प्लस कैपा वी स्क्वायर एन. ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था. सो ये वही रिजल्ट है जहां हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था. अगर मैंने अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम कैलकुलेट करना तो मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा. सो वी टी क्रॉस डी वी बाई डी टी टी प्लस कैपा वी स्क्वायर एन. So this is equal to, we know that cross product is distributive over addition. So distributive means अगर मेरे पास कोई वेक्टर v है और we are taking cross with u plus w, then this is equal to v cross u plus v cross w. So this is distributive over addition. So ये क्या बन जाएगा, v dv by dt t cross t plus k v cube t cross n. v और dv by dt ये स्केलर क्वांटिटीज हैं. सिमिलरली कर्वेचर इज ए स्केलर फंक्शन. इसका जो आउटपुट है हमारे पास एक स्केलर नंबर आएगा. सिमिलरली v इज ए स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वेक्टर के साथ लेंगे और इस एक्सप्रेशन में n सिर्फ वेक्टर है तो इसलिए हम t क्रॉस n लिख रहे हैं और इन दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ को हमने बाहर लिख दिया. सिमिलरली फर्स्ट टर्म के केस में आपने t क्रॉस t लिखा क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इसमें और बाकी दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो आपने बाहर लिख दी हैं. नाउ व्हाट इज़ t क्रॉस t? अगर हम डेफिनेशन देखें व्हाट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a and b. So the cross product of A and B is basically norm of A, norm of B, sin theta n unit vector. So अगर angle between A and B is 0 or in other words मैं एक ही वेक्टर ले रहा हूँ A cross A, so definitely the angle between A and itself is 0. So इस केस में आपके पास ये 0 आ जाएगा. So t cross t is 0 plus kappa v cube t cross n. Now what is t cross n? So इस केस में once again हम कंसिडर करते हैं इस चीज़ को. So this is B, this is T and this is N. So what is T cross N? T cross N, you can use the right hand rule and you can easily see that if we curl the fingers from T to N, then the thumb will tell me the direction of the resultant, which is B in this case. So this is equal to kappa V cube B unit vector. So what is alpha prime cross alpha double prime? This is equal to kappa v cube b. And now what is norm of alpha prime cross alpha double prime? This is equal to kappa v cube b norm. So this is recall. Now kappa is curvature which is greater than or equal to 0. So we can write it down like this. Similarly, speed. If you look at the definition of the speed, then the speed is basically the magnitude of the velocity. So magnitude is non-negative. So इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. और similarly, what is norm of B? B is unit by normal vector. So norm of B is 1. So we can write down that alpha prime cross alpha double prime is equal to kappa v cube. और यहाँ से हम निकाल सकते हैं that this implies that
kappa is equal to alpha prime cross alpha double prime norm divided by v cube. And what is v cube? v cube हमें पता है that v cube is equal to norm of alpha prime cube. So इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी फॉर आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व. और कर्वेचर कैसे निकाल सकते हैं आप? अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम नॉर्म डिवाइडेड बाय अल्फा प्राइम नॉर्म क्यूब. So that's how we calculate the curvature of an arbitrary speed curve. Before calculating this formula for binormal, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई प्लेन है, लेट्स से R2 है जिसमें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. R2 इज ए वेक्टर स्पेस. ये हमने पहले लेक्चर में देखा था. व्हाट इज ए वेक्टर स्पेस? अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी एक बेसिस है और हमें पता है कि इसकी बेसिस 1 0 0 1. So one of the bases of this vector space R2 is 1 0 and 0 1. So basis का मतलब है every vector of R2 or every point of R2 can be written as a linear combination of 0 1 and 1 0. और ये हमने easily देखा था कि how we can write any element R2. I can write it down as this, which is a linear combination of these two elements of R2. So these two elements form a basis of R2. अब next question ये है, is it the only basis of R2? And the answer is no. There are infinitely many elements of R2 that can be part of the basis. So in other words, there can be infinitely many bases of R2. और इसके लिए एक सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है? एक सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई से भी मैं दो वेक्टर लूं जो कि नॉन कोलिनियर है, सो v एंड w, कोई से दो वेक्टर लूं और इन अदर वर्ड्स मैं ये पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूं जो कि इनके हेड पे हैं. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ दोस पॉइंट्स आर v एंड w. सो अगर ये दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हैं, मींस v and w are not like this. So let's choose another color for W. So if V and W are like this, then they can't form a basis. But if V and W are non-collinear, then they form basis of R2. और अगर इस केस में V and W का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें, then it is always going to give me Z direction. So अगर मैं इस x और y का क्रॉस प्रोडक्ट लूं और इन अदर वर्ड्स 0 1 और 1 0 का क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो मेरे पास क्या आएगा? हमेशा z एक्सिस आएगा. लेकिन अगर मैं कोई से दो और वेक्टर ले लूं जो इस प्लेन में है और नॉन कोलिनियर है, देन द क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस w इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस. सो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो कि हम यूज करेंगे इस प्रूफ में. सबसे पहली बात तो ये है कि हमने एक अजम्पशन करनी है अब दैट अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम नॉर्म डिवाइडेड बाय अल्फा प्राइम नॉर्म क्यूब विच इज इक्वल टू कर्वेचर. जैसा हमने यूनिट स्पीड कर्व के केस में assumption की थी that curvature is greater than 0. So इस केस में ये assumption क्या बन जाएगी? सबसे पहली बात तो ये है कि हम रेगुलर कर्व्स ले रहे हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा नॉन ज़ीरो रहेगा. So इसका मतलब ये है कि this can't be equal to 0 और this can't be equal to infinity. Next, अगर मैं इस कंडीशन को लिखना चाहूँ that what is this condition that curvature is equal to 0? This is the same as alpha prime
क्रॉस अल्फा डबल प्राइम नॉर्म इक्वल टू 0। सो इस केस में ये कंडीशन क्या बन जाएगी? ये कंडीशन ये बन जाएगी कि अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम इज ग्रेटर देन 0, और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है एक वेक्टर का इसलिए ये नॉन नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। और क्योंकि हमने इस चीज़ को अज्यूम कर लिया है दैट कर्वेचर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इन अदर वर्ड्स वी आर नॉट कंसिडरिंग द केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में सिर्फ कर्वेचर 0 होगा, उस केस को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी? अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम इज ग्रेटर देन 0। और अगर कोई से भी मैं दो वेक्टर्स लूं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, इन अदर वर्ड्स 0 नहीं हो रहा, देन दिस इंप्लाइज अल्फा प्राइम एंड अल्फा डबल प्राइम आर नॉन कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 0 होता, अगर ये बिल्कुल ऐसे होते जैसे इस केस में V एंड W हैं, then the cross product of V and W in this case is 0। लेकिन उसके अलावा अगर इन दोनों के दरमियान कोई और एंगल है तो डेफिनेटली क्रॉस प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। सो दीज टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर। अब हमने ये भी देखा था कि अगर अल्फा प्राइम देखें देन दिस इज इक्वल टू VT, और अगर हम अल्फा डबल प्राइम देखें then this is equal to dv by dt t plus kappa v square n। So basically alpha and alpha double prime ये lie कर रहे हैं in this tn plane, क्योंकि इसमें देखें इसका कोई b कंपोनेंट नहीं है, so इसमें जो बायनॉर्मल है वो नहीं आ रहा। सिमिलरली अल्फा डबल प्राइम में t और n कंपोनेंट्स हैं और बायनॉर्मल कंपोनेंट नहीं है। सो इसका मतलब है अल्फा प्राइम और अल्फा डबल प्राइम दोनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं और दोनों नॉन कोलिनियर हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है अगर मैं t और n का क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो मेरे पास एक वेक्टर b आएगा। So the angle between t and this vector b. So t cross n is equal to b, ये by definition है, by definition of the Frenet frame। लेकिन अगर कोई से दो और वेक्टर हैं जो इसी प्लेन में हैं, अगर इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं then it will also give me the same vector b। लेकिन इस केस में इसका जो मैग्नीट्यूड है अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम का वो 1 हो भी सकता है और 1 नहीं भी हो सकता। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी। सो बेसिकली दिस इज सम वेक्टर, ग्रीन वेक्टर। सो दिस इज अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम, but the magnitude or the length of this vector may or may not be equal to 1। So हम क्या करते हैं, इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसको इसके नॉर्म से डिवाइड कर देते हैं। So unit binormal vector which is perpendicular to t and n and it is a unit vector can also be obtained by taking the cross product of velocity and acceleration of the curve, but this vector may or may not be a unit vector, so we divide this vector by its magnitude, and that's how we get the binormal vector. So in general, for arbitrary speed curves we can calculate the binormal vector by taking the cross product of velocity and acceleration which will lie in the tangent normal plane. So this plane t n plane, and if we take the cross product of this it will give me a vector in the direction of binormal vector, and if I divide this vector by its magnitude
then it will give me a unit binormal vector. Now let's calculate the torsion. So for arbitrary speed curve, we can calculate the torsion in the following way. So we take the cross product of alpha prime, alpha double prime, and take the dot of this with alpha triple prime and divide it by the norm of alpha prime and alpha double prime square. So if we do that, we will get the torsion of an arbitrary speed curve. Now to prove this thing, we first calculate alpha prime cross alpha double prime and take the dot product of this with alpha triple prime, and then we will see that by simple steps it will give us the formula for torsion. Now what is alpha prime cross alpha double prime? ये हमने already calculate किया हुआ. This is kappa VQB. Now what is alpha triple prime? Now we know that alpha double prime is equal to dV by dt t plus kV square n. Now if I want to calculate alpha triple prime, I can take the derivative of alpha double prime. Now there is an important observation. We know that given any curve with some orientation, given any curve, I can calculate unit tangent vector, unit normal vector, and the angle between them is 90, and unit binormal vector, and the angle between B and N and angle between B and T is 90 degrees. And given any vector at this point, so given any vector, I can write it down as a combination of T, B and N. And since alpha triple prime is a vector at this point, arbitrary point T, so this is alpha triple prime. So we can write down alpha triple prime as AT plus B N plus C B. Now अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें विद अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम के साथ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके इस कंपोनेंट ऑफ बी को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. और ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम इज के वी क्यूब बी. और अगर आपको याद हो तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? एक विच इज कंपोनेंट ऑफ टी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम के टी कंपोनेंट के साथ. सो इस केस में वो 0 है. सिमिलरली बी को मल्टीप्लाई करेंगे एन के कंपोनेंट के साथ इन अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम. वंस अगेन वो 0 है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे बी के कंपोनेंट सी को विद द कंपोनेंट ऑफ बी इन अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम विच इज के वी क्यूब. सो इसका मतलब है इस सी के अलावा बाकी जो भी कंपोनेंट हम लेंगे उस केस में आंसर 0 आएगा. सो हम क्या करते हैं? इस सी को फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट दिस सी. इसका डेरिवेटिव ले लें आप. अल्फा ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी टी प्लस के वी स्क्वायर एन प्राइम. नाउ अगर मैं टी का डेरिवेटिव लूं, देन बाय फ्रेने फार्मूलाज दिस इज इक्वल टू कैपा वी एन. सो इट विल गिव मी कंपोनेंट ऑफ एन. सो इसका हम डेरिवेटिव नहीं लेते, इसको हम इग्नोर कर देते हैं. सिमिलरली जब मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लूंगा, सो सिर्फ एन प्राइम ऐसी टर्म है जो कि फ्रेने फार्मूलाज के मुताबिक मुझे एक ऐसा कंपोनेंट देगी जिसमें बी की टर्म आ रही है. So I'll only write down kappa v square n prime plus other terms, and we are ignoring these terms. So this is equal to, by Frane formulas, minus kappa vt plus tau vb plus other terms which we are ignoring, which is equal to kappa tau vqb plus other terms which don't involve the component of b.
so we are ignoring these terms. So alpha triple prime is equal to kappa tau v cube b plus other terms, because when we take the dot product of this alpha triple prime with alpha prime cross alpha double prime, all of the terms will become 0 in this dot product. So हम सिर्फ जो b का component है वो लिख रहे हैं. So what is alpha prime cross alpha double prime dot with alpha triple prime? This becomes kappa v cube b dot with kappa tau v cube b plus other terms. So this is equal to kappa square v6 and dot product of b and b is 1, because this is equal to norm of b cosine of the angle between them, and cosine of the angle between them is 1, because cosine of 0 is 1, so the angle between b and b is 0 degrees, so this is equal to 1. So norm of b is 1, so that's why b dot b is 1. So we have got the value of alpha prime cross alpha double prime dot product with alpha triple prime. Now we can calculate tau from here. So tau becomes alpha prime cross alpha double prime dot alpha triple prime divided by kappa square v6. Now we know that what is kappa v cube. So from here, so from 1, so from 1 we can say that alpha prime cross alpha double prime norm is equal to kappa v cube, and so norm of alpha prime cross alpha double prime square becomes kappa square v6. So this implies that torsion is equal to alpha prime cross alpha double prime dot product with alpha triple prime divided by alpha prime cross alpha double prime square. So that's how we calculate the torsion. So if we want to calculate for a general curve, general arbitrary speed curve, अगर हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर, नॉर्मल, बायनॉर्मल, कर्वेचर और टॉर्शन कैलकुलेट करना, तो हम सबसे पहले इन क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट अल्फा प्राइम नॉर्म. सो लेट्स कैलकुलेट अल्फा प्राइम टी. सो इन दिस केस दिस इज 3 minus 3t square 60 and 3 plus 3t square. So what is alpha prime of t norm in this case? So this becomes 3 minus 3t square plus 60 square plus 3 plus 3t square. So अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 18 1 plus t square. So that is the value of alpha prime t norm, which is the speed of the curve. Next we want to calculate alpha prime cross alpha double prime. So what is alpha double prime? This is just equal to minus 60, 6 and 6t. Now if we want to take the cross product, we will apply the definition of cross product, which is in fact equal to u1, u2, u3, the components of alpha prime, which are 3 minus 3t square, 6t, 3 plus 3t square, and the components of alpha double prime, so which is equal to minus 60, 6 and 60.
Now we can take 6 common from the third row and we can take common 3 from the second row. So this is just equal to simplify the computation, this is just equal to u1, u2, u3 and 1 minus t square, 2t and 1 plus t square, and similarly minus t, 1 and t. So all of this will be multiplied with 6 into 3 which is 18. और अगर हम इसको कैलकुलेट करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 18 minus 1 plus t square minus 2t 1 plus t square. So basically इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना, इसका नॉर्म कैलकुलेट करना. हम बाय नॉर्मल की डेफिनेशन में इसको यूज कर रहे हैं. सो व्हाट इज द नॉर्म ऑफ अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम. सो वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर. So if we calculate the norm, it becomes 18 square root 2 1 plus t square. So you can easily calculate that, and if you simplify that you will get this quantity. So what is next? We want to calculate alpha prime cross alpha double prime, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, और लेकिन इसका हमने डॉट लेना है विद अल्फा ट्रिपल प्राइम. सो लेट्स कैलकुलेट अल्फा ट्रिपल प्राइम. सो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा 6 इंटू माइनस 1 0 1. So why alpha triple prime is equal to this? Because we have seen that alpha double prime is equal to this. So this implies alpha triple prime is equal to minus 6 0 and 6, which is equal to 6 minus 1 0 and 1. So we can take the cross product of alpha double prime and alpha double prime, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, और ये हमारे पास आया था 18 minus 1 plus t square minus 2t and 1 plus t square. और अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, और थर्ड को थर्ड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर. सो अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू 18 minus 1 plus t square minus 2t 1 plus t square dot with 6 minus 1 0 1. So इसमें 18 और 6 को हम कॉमन ले सकते हैं, and at the end when you will calculate the value it will become 6 into 2 into 18. So that's the dot product of these two quantities. और अगर हम इन फार्मूलाज पे देखें तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है हर चीज़. So we have calculated alpha prime, we have calculated alpha prime norm, we have calculated alpha prime cross alpha double prime, we have calculated its magnitude, and we have calculated alpha prime cross alpha double prime dot alpha triple prime, and we have also calculated the norm of alpha prime cross alpha double prime. और ये तमाम quantities अगर हमने calculate कर ली हैं, then we can easily see that if I divide alpha prime with alpha prime norm, then I get tangent vector is equal to 1 minus t square 2t 1 plus t square divided by square root 2 1 plus t square. And similarly, if I take the cross product of b and t, और b हमने already calculate कर लिया है, we just need to divide alpha prime cross alpha double prime with the magnitude of this vector. So इस केस में let me write down what is b. So b हमारे पास बन जाएगा minus 1 plus t square minus 2t
1 plus t square divided by square root 2 1 plus t square। और इस केस में देखें हमने t और b को कैलकुलेट कर लिया, तो अगर मैं b क्रॉस t करूं तो मेरे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का हम इजीली क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कर्वेचर, और कर्वेचर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम के नॉर्म को डिवाइड करेंगे अल्फा प्राइम नॉर्म क्यूब के साथ। सो व्हाट वी विल गेट, सो वी विल गेट कर्वेचर इज इक्वल टू 1/3 1 plus t square. Or how to calculate the torsion, this is just equal to dividing out this quantity with this quantity। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास टॉर्शन बन जाएगा ये क्वांटिटी। और अगर आप इस केस में ऑब्जर्व करें तो कर्वेचर और टॉर्शन दोनों इक्वल है। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व के लिए फ्रेने फ्रेम और टॉर्शन और कर्वेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में फ्रेने फ्रेम की, और फ्रेने फार्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे टू सी सम ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सम कर्व्स। सो गिवन एनी कर्व बीटा, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ न्यू कर्व बीटा हैट such that beta has some properties of beta and helps us to understand those properties in a better way। So यूं समझ लें हमने एक कर्व बीटा ली है कोई, और उस कर्व से हम एक और कर्व डिफाइन कर रहे हैं जो कर्व बीटा है उसकी कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, और बाकी जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको इग्नोर कर रहा है। सो इस तरह करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जिस चीज़ पे हम कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, जिस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कर्व पे हम कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही हमें नज़र आ रही होती है, और बाकी जो कि हमारे लिए उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं होती उसको हम इग्नोर कर देते हैं। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सच कंस्ट्रक्शन इज स्फेरिकल इमेज। सो स्फेरिकल इमेज क्या है, एक यूनिट स्पीड कर्व लें आप, बीटा एक यूनिट स्पीड कर्व है। हमें पता है अगर बीटा एक यूनिट स्पीड कर्व है देन बेसिकली टेंजेंट इज इक्वल टू बीटा प्राइम, बिकॉज बीटा इज अ यूनिट स्पीड कर्व। अब टेंजेंट क्या चीज है, सो कोई से भी मेरे पास कर्व गिवन है, मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो बीटा इज अ यूनिट स्पीड कर्व, देन अगर मैं बीटा प्राइम कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास हमेशा यूनिट टेंजेंट आएगा। सो किसी भी पॉइंट पे मैं यूनिट टेंजेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। इट्स अ वेक्टर, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज अ वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट, लेट्स से दिस इज बीटा ऑफ टी नॉट, दिस इज बीटा ऑफ t1, दिस इज बीटा ऑफ t2, this is beta of t3, this is beta of t4, up to so on. So they are vectors at each and every point on the curve, and this is called tangent vector field, क्योंकि हमारे पास कर्व के हर पॉइंट पे एक वेक्टर है, और इन दिस केस दिस इज टेंजेंट वेक्टर, सो दिस इज टेंजेंट वेक्टर फील्ड। अब अगर मैं इस इनिशियल पॉइंट को बीटा ऑफ टी नॉट से ओरिजिन कर दूं, सो बेसिकली मेरे पास ये ओरिजिन है, और इस कर्व को बेसिकली दिस कर्व इज समवेयर इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस t को मैं कह देता हूं, लेट्स से दिस इज t नॉट, दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t3, दिस इज t4। तमाम के तमाम यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर मैं इस t नॉट को ट्रांसलेट करूं इन सच ए वे दैट द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस t नॉट इज नॉट बीटा ऑफ t नॉट बट इट इज नाउ द ओरिजिन,
so it will be somewhere over there. और क्योंकि इसकी जो लेंथ है टी नॉट की ये 1 है, सो इस लाइन की जो लेंथ है ये 1 है, सो इट्स ए यूनिट लाइन. सिमिलरली अगर मैं T1 कैलकुलेट करूं तो मेरे पास T1 कुछ यहाँ पे होगा, एंड वंस अगेन दिस लेंथ इज 1. सिमिलरली T2 कैलकुलेट करूं मैं, सो T2 मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, और वंस अगेन द लेंथ ऑफ T2 इज 1. अप टू सो ऑन. मैं इस तरीके से इन तमाम वेक्टर्स को जो कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं उनको मैं ट्रांसलेट करता हूं such that the initial point of each and every tangent is origin now and not a point on the curve. अब मैं क्या करता हूं, इन तमाम वेक्टर्स के जो हेड्स हैं उनको अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास एक कर्व बनेगी. So, इन तमाम यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स को मैं मिलाऊं तो मेरे पास एक कर्व बनेगी, और ये कर्व जो है ये एक स्फीयर पे लाई करेगी, स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस. और ऐसा क्यों है, क्योंकि द लेंथ ऑफ टी नॉट इज 1, द लेंथ ऑफ T1 इज 1, द लेंथ ऑफ T2 इज 1, एंड द लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी टेंजेंट वेक्टर इज 1 बिकॉज इट इज अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और इट विल लाई ऑन ए स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस. So how do we define spherical image of a unit speed curve? So कोई से भी मेरे पास यूनिट स्पीड कर्व गिवन है, उस केस में मैं बीटा प्राइम लूँ तो मेरे पास टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा. अगर उन टेंजेंट वेक्टर्स को मैं ट्रांसलेट करूँ इन सच ए वे कि उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो बीटा ऑफ टी नॉट की बजाय अब ओरिजिन हो जाएगा. सो इस केस में जो इसके टर्मिनल पॉइंट्स हैं या जो हेड्स हैं उनको अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास एक कर्व बनेगी, और इसको मैं कहता हूँ दिस इज द स्फेरिकल इमेज ऑफ द कर्व. सो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सो स्फेरिकल इमेज इज बेसिकली ए कर्व सिग्मा विच इज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू द टेंजेंट वेक्टर फील्ड ऑन द कर्व. एंड हाउ डू वी डिफाइन इट? दिस इज इक्वल टू v1 of t, v2 of t, v3 of t. So basically these are components of the velocity, or in other words beta prime. और इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये देखें, इसका जो इनिशियल पॉइंट है इन जनरल अगर मैं बीटा प्राइम लिखूं, सो इसका इनिशियल पॉइंट बीटा ऑफ टी है, जस्ट लाइक टी नॉट का इनिशियल पॉइंट बीटा ऑफ टी नॉट है, T1 का इनिशियल पॉइंट बीटा ऑफ T1 है. सो इन जनरल बीटा प्राइम ऑफ टी का इनिशियल पॉइंट बीटा ऑफ टी है. इसमें टी की वैल्यू आप चेंज करें तो आपके पास डिफरेंट टेंजेंट वेक्टर्स आएंगे. सो इसका जो हमने वेक्टर पार्ट है वो ले लिया, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो हमने ओरिजिन कर दिया. सो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं स्फेरिकल इमेज ऑफ ए कर्व. सो वंस अगेन दिस इज ए कर्व बीटा, और किसी भी पॉइंट बीटा के आप एक टेंजेंट वेक्टर बना सकते हैं, और इस टेंजेंट वेक्टर को अगर आप ट्रांसलेट करें यहाँ पे इन सच ए वे कि उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन हो जाए. सो दिस इज द टेंजेंट वेक्टर, एंड दिस टेंजेंट वेक्टर इज translated over here, and similarly corresponding to each and every point on the curve I will get a tangent vector. Let's say this is tangent prime, then I will get another tangent. So this will go to this point, and similarly each and every tangent vector will be translated to the origin, and since the length of each and every tangent vector is unit, so it will lie on a unit sphere. So that's how we define the spherical image of a curve. Now let's consider a particular example and see that how this spherical image of a curve helps us to understand more about the geometry of some curve. So let's consider a unit speed curve which is a helix in this case. हमने ये काफ़ी दफ़ा प्रूव किया हुआ है that it's a unit speed curve and it's a helix. अब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लूँ
तो मेरे पास एक वेक्टर आएगा। सिमिलरली अगर मैं एक और पॉइंट पे टेंजेंट लूँ तो एक वेक्टर आएगा, एक और पॉइंट पे टेंजेंट लूँ तो एक वेक्टर आएगा, एंड अप टू सो ऑन। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अगर इन टेंजेंट वेक्टर्स को मैं ट्रांसलेट करूं टू द ओरिजिन, सो दिस सी इज ओरिजिन, सो लेट्स राइट इट डाउन ओ, सो दिस इज द ओरिजिन। अगर मैं इन टेंजेंट वेक्टर्स को ट्रांसलेट करूं such that the initial point is origin, we have seen that it's going to lie on a unit sphere. So this is a unit sphere, a sphere of radius 1. अगर ऐसा है तो इनका इमेज कौन सी कर्व बनेगी? सो बेसिकली इस केस में अगर मैं इन तमाम वेक्टर्स को ट्रांसलेट करूं मेरे पास एक सर्कल बनेगा, सर्कल ऑन द स्फीयर। ये सर्कल हाइट में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये कहीं यहाँ भी हो सकता है और ये कहीं यहाँ भी हो सकता है। सो दिस ऑल डिपेंड ऑन दिस हाइट। सो ये इस हाइट पे डिपेंड कर रहा है। सो इस केस में हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा हो कि हाउ दीज आर ट्रांसलेटिंग टू दिस सर्कल। सो मे बी दिस सर्कल इज somewhere very low. So if it's low, then we can see that when we translate these tangent vectors, then it will give me a circle. So the spherical image gamma of beta is a circle. So is a circle on unit sphere. So इससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है टेंजेंट्स की, और क्योंकि ये हमेशा एक स्फीयर पे लाई कर रहे हैं और इस केस में ये स्फीयर के ऊपर एक सर्कल है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो टेंजेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन एक ख़ास पीरियड के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। और ये पीरियड कौन सा है? इस पॉइंट से स्टार्ट लेंगे आप। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट, और इस स्टार्ट और इस एंड के बाद आपका एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा स्फीयर पे, और इसके बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो दोबारा रेपिटिशन होगी और दोबारा वो सर्कल के ऊपर, सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगी। सो इसका मतलब है कि इट गिव्स अस आइडिया अबाउट हाउ द टेंजेंट मूव्स, tangent to this curve, how they behave in general. So ये हमेशा एक सर्कल पे लाई करेंगे। So they are repeating, so their directions are repeating in a very very periodic way. So this tells us about one aspect of the geometry of this unit helix. So that's where the spherical image of a curve is important. Now this spherical image sigma is basically t, and we know that sigma prime is equal to t prime, and by Fresnel we can say that this is equal to kappa n, and since it's a unit speed curve, so we are writing down the velocity to be equal to 1. Similarly, we can calculate sigma double prime, which is equal to d kappa by ds n plus kappa n prime. Now according to Fresnel formulas, n prime is equal to minus kappa t plus tau b. So this becomes sigma double prime is equal to d kappa by ds n plus kappa minus kappa t plus tau b. So this implies gamma double prime is equal to d
kappa by ds n minus kappa square t plus kappa tau b. Now if I want to take the cross product of sigma prime and sigma double prime, then I take the cross product of these expressions minus kappa square t plus kappa tau b. Now this is equal to, now n cross n is 0 because the angle between n and n is 0 and sine of 0 is 0. So we will get minus kappa cube n cross t plus kappa square tau n cross b. Now let's have a look at this frame. So this is b, this is t, and t cross n is b. Now from here, what is n cross t? So we can easily see that n cross t is minus b. So this is equal to kappa cube b. And similarly, what is n cross b? This is t, so plus kappa tau t. So अगर इस केस में हमने कर्वेचर कैलकुलेट करना है इस सिग्मा का, विच इज द स्फेरिकल इमेज ऑफ द यूनिट स्पीड कर्व, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सिग्मा प्राइम नॉर्म के क्यूब के साथ. सो व्हाट इज द क्यूब ऑफ सिग्मा प्राइम? दिस इज k, और so this implies curvature of sigma is basically equal to norm of this. So norm of this becomes, so sigma prime cross sigma double prime norm divided by k cube. So अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो बन जाएगा 1 प्लस tau divided by kappa square root. So this is the curvature of the spherical image of the curve, and we can see that this is greater than or equal to 1. So कोई सी भी हमारे पास कर्व है उसका हम spherical image कैलकुलेट कर सकते हैं, और spherical image जो है उसका कर्वेचर इस तरीके से गिवन होता है. So what we have learned today, so सबसे पहले हमने ये देखा कि how to compute the Frenet operators. So Frenet operators means unit tangent vector, unit normal vector, unit binormal vector, curvature and torsion. ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके जो फार्मूलाज हैं उनका हमने प्रूफ देखा कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा हम क्यों कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद हमने उन फार्मूलाज को अप्लाई किया एक एग्जाम्पल के ऊपर और हमने कैलकुलेट किए फ्रेने ऑपरेटर्स को. उसके बाद हमने ये देखा कि कोई भी यूनिट स्पीड कर्व है उससे रिलेटेड हम एक और कर्व डिफाइन कर सकते हैं विच विल टेल अस सम एस्पेक्ट of the geometry of the curve. Next time we will be continuing this section and we will discussing cylindrical helix, और उसके साथ हम covariant derivative को discuss करेंगे. This is the end of the lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.